Hello everyone, welcome back. Today in this video, we will talk about the props and state in React component. So in the previous video, we have discussed about the conditional rendering, and let me continue from this point onwards. So if you have not seen the previous video, then please check out the previous video to understand it properly. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एज ए प्रॉप्स यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं और यहाँ पे पास करते हैं सपोज एज and age is suppose 45, right? So this age is to be received in the functional component here in a props. So if you want to show the age, then let me show the age, and this is from the previous video. So let me quickly remove it and show the props dot age, right? And see what is the output. So let me clear it first and refresh it. So you will get here the 45, right? And the second important point is that the props are immutable, so we cannot change the value of the props. If we will try to change the value of the props, then it will produce an error. So suppose I am writing here the props dot age is equals to 70, तो आपको एक error generate करके देगा. So we have got here the error message that cannot assign to read-only properties age, right? First of all, remove this line, and the next point to understand is that the props is maintained outside from the component. ये हमारा component है conditional rendering का. तो अगर मैं age को maintain रखना चाहता हूँ इस पूरे component के अंदर, तो मैं इस state को maintain नहीं रख सकता because the functional component is a stateless component. राइट तो इसका कोई इंटरनल स्टेट नहीं होता है, और जब कभी भी प्रॉप्स का वैल्यू चेंज करना होगा तो मुझे इसके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जाना होगा और इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर फिर से हमको पास करना पड़ेगा. तो जब जब हम लोग इस पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करेंगे तब तब हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा वो रीरेंडर होगा और हम लोगों को एक न्यू वैल्यू देगा. सो लेट मी शो यू दैट वी हैव गॉट द 90. ये जो 90 है वो मेंटेन होता है इसके पेरेंट वाले कंपोनेंट के अंदर, राइट? और जब कभी भी वैल्यू को हमको पास करना पड़ता है तो एज ए पैरामीटर हम लोग पास करते हैं. तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो हम लोग प्रॉप्स यूज करते हैं वो हम लोगों को पेरेंट के अंदर से मिलता है, राइट? सो फाइनली वी हैव गॉट द कंक्लूजन दैट द प्रॉप्स इज मेंटेन्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंपोनेंट. वी कैन नॉट मेंटेन इट इंटरनली, राइट? So the next point to understand is that if you want to maintain the internal state, then you have to use the React hook that is called the use state. So use state is not the part of this video. We will discuss in the coming video that what is the use state and how the use state is maintained in functional component. Now come to the state. So state is used inside a class component. So let me quickly create one class component for you. So come to the components folder और inside component folder हम लोग क्या करते हैं class component को create कर लेते हैं. So here is our class component dot jsx and there is a shortcut that rce for React class component with export, right? So let me quickly remove this export from here and implement in the app.js. तो अभी हम इस फंक्शनल कंपोनेंट को यहाँ से अभी रिमूव कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं क्लास कंपोनेंट को. सो हियर इज आवर क्लास कंपोनेंट एंड मेक श्योर दैट दिस क्लास कंपोनेंट इज इंपोर्टेड फ्रॉम द फाइल, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट. सो हियर इज द क्लास कंपोनेंट एंड रिमूव इट, refresh it, got the class component. Now in class component also we can pass the parameter as a props. So here if I want to pass the user name and the username is suppose ezycode and this value is to be received in a class component as a props. तो यहाँ पे अगर हम लोगों को उसका props रिसीव करना है तो props को रिसीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं this dot props. So write down here the console.log and print here this dot props and let me show you that what is the output. So see here is the output.
So username is ezycode. Now the same concept is applied here also for the props, that props are immutable and we cannot change the value of the props. So if I will try to change the props value, then try to change it, the props dot username is equals to Amit, and let's see what are the output you will get. Here is the error message you will get here, that cannot assign the read-only properties, right? तो हम लोगों को क्या पता चला कि प्रॉप्स जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, चाहे वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हो या क्लास कंपोनेंट के अंदर, right? And the next point to understand about the state is that the state is maintained internally inside a component. That state cannot be maintained from outside of the component. तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो उसको स्टेट को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग स्टेट को मेंटेन करते हैं तो ये हमारा क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट, और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर में कोई भी स्टेट नहीं होता है, राइट? बिकॉज द फंक्शनल कंपोनेंट इज नोन एज द स्टेटलेस कंपोनेंट. तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लास के अंदर आते हैं तो क्लास के अंदर इंटरनली उसके स्टेट को हम लोग मेंटेन रख सकते हैं, और नॉर्मली द स्टेट इज क्रिएटेड इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर. सो create a constructor, and here you can assign the properties for the state. That suppose here I am taking the uname, and the uname is suppose Aditya, right? So this state is maintained inside this class component only, and this state cannot be used by the child component, and this state can be rendered here inside a curly braces. Write down this dot state dot uname, right? So you will get here the result as Aditya, right? तो हम लोग यहाँ पे क्या किया कि स्टेट के अंदर में जो वैल्यू लिया उस वैल्यू को स्क्रीन पर हम लोगों ने रेंडर कर दिया. Now the next point to understand about the state is that we can change the value of the state internally, but in props we cannot change the properties of the props. Let me show you quickly that how this state is changed, so that wherever this state is implemented, that is to be re-rendered after the state changed, right? और इसको implement करने के लिए मैं एक quickly React का लाइफ साइकिल यूज करूंगा. अगर आपको अब तक नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये समझना है हम लोगों को कि स्टेट जो होता है वो चेंजेबल होता है, इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्ट के लाइफ साइकिल फंक्शन को, ठीक है? तो आपको अगर नहीं समझ में आए तो कोई अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको कवर करेंगे कि कंपोनेंट डिड माउंट क्या करता है, राइट? अब इस फंक्शन के अंदर में हम लोग अगर स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन है सेट स्टेट, और इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर हम लोगों को पास करना होता है ऑब्जेक्ट जो इस वैल्यू को चेंज करेगा, राइट? तो इस स्टेट के अंदर हम लोगों को चेंज करना है यूनेम को. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यूनेम में एक न्यू वैल्यू डाल देते हैं, सपोज प्रसाद, राइट? एंड नाउ सी द आउटपुट. सो हियर वी हैव गॉट द प्रसाद. सो इनिशियली द स्टेट वाज आदित्य, राइट? एंड आफ्टर चेंजिंग द स्टेट this value is re-rendered, right? So we have got the result Prasad at the end. So I hope you understand this video. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.